अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों ने वक्त निकाला है और हम एक आज अहम मौजू पे बात करेंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अगर आप ये एक दफ़ा समझ जाएंगे टॉपिक को तो बार बार जब भी ये एपिसोड लाइमलाइट में आता है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग। आज जैसे आपको पता है एक फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इग्नाइट किया है, एक फ्रेश स्टार्ट है उसका, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है। इट इज़ नॉट आइसोलेटेड, इट हैज़ ए हिस्ट्री, एंड इट्स हिस्ट्री dates back to not only 1948 when the state of Israel was established, लेकिन it dates back earlier than that as well, before the 20th century even, or late in the 19th century. तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो तारीखी सफ़र के थ्रू हम गुजरें इकट्ठे। And over here in my presentation I will try to present objective facts as much as I can. अपना ओपिनियन मैं इधर पेश नहीं करूँगा। एंड मैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पेश करने का मकसद यहाँ पे ये है, वी शुड बी एबल टू कम टू ए कॉमन ग्राउंड विद रिगार्ड्स टू सर्टेन इश्यूज, और उन सर्टेन इश्यूज में से ये एक बड़ा अहम इशू है, विच इज व्हाई यू सी ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर आर डेमोन्स्ट्रेशंस इवन फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। इन फैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि नॉन मुस्लिम्स इस वक्त वेस्ट के अंदर ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एज अपोज टू मुस्लिम्स विद रिगार्ड्स टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। एंड अगर हम इकट्ठे होंगे इस चीज के ऊपर, इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, in this understanding of justice and peace, तो हम एक चेंज लेके आ सकते हैं। क्योंकि अपार्थाइड साउथ अफ्रीका भी इसी तरह चेंज हुआ था, किसी जंग के जरिए नहीं चेंज हुआ था, सिर्फ नैरेटिव जीतने से चेंज हुआ था। और यहाँ पे इस तारीख में आप देखेंगे कि नैरेटिव्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफर एनी सॉल्यूशंस हियर, बिकॉज सॉल्यूशंस के अंदर हमारी डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकती हैं, सॉल्यूशंस के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सॉल्यूशंस में कोई कह सकता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई कह सकता है कोई टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक ही स्टेट होनी चाहिए, वो पैलेस्टीनियन स्टेट है। कोई कह सकता है कि हमें मॉरली इसराइल को अब रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, वी शुड मूव ऑन। कोई कह सकता है कि पैलेस्टीनियंस को चाहिए कि इस इलाके से निकल ही जाए ताकि कहीं और जो अरब स्टेट्स सराउंडिंग पैलेस्टाइन है वो उनको एक्सेप्ट कर लें। डिफरेंट बातें हैं, डिफरेंट प्रपोजल्स हो सकते हैं सॉल्यूशंस के, एंड हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि मेरा पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ शेयर करना है कि वी कैन कम टुगेदर ऑन दिस मैटर रिगार्डलेस ऑफ what sort of theological or political or whatever sort of opinions we hold. अगर इंसानियत है और इंसाफ पसंद है हम लोग, तो you will be able to see what's been happening in the 68 years that I will share with you. And in 68 years का सफ़र जो है हम 1880 से शुरू करेंगे और हम 1948 तक जाएंगे। इवन दो उसके बाद 1948 के बाद 2020 तक का सफ़र जो है, which is about 72 years, it is also very important. And कभी दोबारा मौका मिलेगा तो हम वो भी तय करेंगे। लेकिन we have to start somewhere, and the point in history that I've chosen for this talk specifically is 1880, and वो आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन before we go into that, we need to make a distinction, and ये distinction बहुत important है। The distinction between who are the Jews and who are Zionists, what is Judaism and what is Zionism, because इनको बहुत easily दोनों को equate किया जा सकता है। So it's important on the outset to make this distinction, and इस distinction के लिए I would like to play a short clip for you, जहाँ पे एक रैबाई जो है नेटोरा कार्टा का, जो कि एक प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट है, उसके अंदर एक जूइश रैबाई है who is going to share his thoughts and is going to make us appreciate how these two, Zionism and Judaism, are different. As we see this last Saturday, it was shocking to the world, but the world doesn't seem to take in regard the 75 years that every day almost you have Palestinian death and suffering. But we as Jews do take this into consideration. It's not how I personally look at this. It's how, as a Jew who's observant, who's following the rules of the Judaism, of the Torah,
Judaism is subservience to God. That's what it's all about. It's a religion of 3,000 years, while Zionism is a mere 150 years. It's a transformation to nationalism, to have a piece of land. It's a political movement. It's a materialistic movement. It was started by Jews who were non-religious, and they're simply incorporating, using the name Israel, using the Star of David, and claiming that it's a God, it's given to them by God. And we who are following the Torah, who are true to the Torah, stand up adamantly refuting what they're saying. The Torah clearly states that we shall not kill, we shall not steal, and the whole concept is strange, is totally antithetical to our teachings, contradictory. The Jewish community had been living together with the Muslim community and the Christian community, and since this movement started, and since they gained hold in the land and eventually got rule over the land, there's been endless bloodshed. There's hate that has grown thousandfold. It's a wedge driven between the Jews and the Muslims, and it's brought death and suffering to the Palestinian people in the majority, but to the Jewish populace also. As we see this last Saturday, it was shocking to the world, but the world doesn't seem to take in regard the 75 years that every day almost you have Palestinian death and suffering. But we as Jews do take this into consideration. We say this is clearly a rebellion against God, and it hurts us more than usual because it's being done in our name. And the rabbis you are seeing, the power bases that you are seeing in the settlements, that is fringe to the Jewish communities, those are the ones who bought into this tale that it's God's wish. But the central part of Judaism, the very religious, in whatever country, maybe in Argentina, the very religious says, no, we're dead set against this. We cry with the Palestinians. And therefore, what's happening today in Gaza, that they're bombing them relentlessly, and they're pointing and they're accusing them of being animals. It's even hard to repeat, and whatever they say of them, of being terrorists, it's not. It's all to cover their totally illegitimate occupation. And to that, I'll bring a simple proof. We lived together, the Jewish community, for hundreds of years in Palestine, in Egypt, Morocco, Tunisia, Iran, in all the countries we lived and flourished as religious Jews amongst religious Muslims without any human rights groups to protect us. We always lived together. We babysat each other's children, even though we have a distinctly different religion. And it was never a cause of animosity. All that changed is the introduction of Zionism, the control of the land. And since that came, which is not 1948, it's in the 1890s or so, and they started coming in and taking over the lands. Since then, there's death and suffering, the Palestinians and of the Jews, because they are creating this fear, this hate, this estrangement. We can show many pictures how the Jews lived together. Anybody old Arab will tell you, and every old Jew, how we used to babysit each other's children, like I say, and help each other. And I've had many stories of people will tell us. So it's clearly what these Ben Gvir and these other people are saying. They are coming from Mizrahi. That is that segment that is religious Zionists, but not the central, what we call the Eid Chorei, this God-fearing community, and around the world. We stand in total opposition, and it hurts us, and we have no words for the suffering, the Palestinians. That's why we came out, let's say even today. Yes, we go out in tens of thousands, but we would have hundreds of thousands demonstrating constantly, but the fear of the repercussions from the Zionists, because they're vicious. We went out, 2 days ago to Manhattan. We demonstrated. I came back, the tar cars were slashed, the mirrors were broken. This is nothing to what they threat. They have death threats, and in Jerusalem and Al-Quds and in the other parts of occupied Palestine, they people get killed and arrested and so forth. So there's a reason why there's less of a voice that you will hear, even though our communities are full in opposition to Zionism. And we plead with the leaders today. It's very scary what today we are seeing. And there's assembled 300,000 soldiers at the gates of Gaza, and it's and of course the bombing there, and
it's heartrending. There's no words, and we can only again plead with the world leaders and demand that this injustice, this criminality, this suffering of the Palestinian people has to be addressed. It must be stopped. One day this will end. It's against God, and we as Jews are crying and hurting with them and praying for them. And we go out tirelessly. Some of us go out all the time. I mean, we're doing this for years, and many of others. There's demonstrations in the front of the UN, and therefore we're going out. A lot of the media doesn't cover it because they know that they will be accused of being anti-Semitic. But we try. We hope that with God's help, that with His compassion, that He will free them, and ultimately with a totally free Palestine, we as Jews will be able to show our tremendous gratification for the fact that we were embraced and taken in when we suffered in Europe. We went through crusades, inquisitions. It was the Muslim countries that took us in, and we flourished there. So we should be able to show again our gratefulness, and not to watch how they're being vilified. We hope it will happen soon in our days, and we apologize that what's being done in the name of Judaism. Okay, so आप लोगों ने सुना कि what the rabbi is saying. He's making a distinction between what Judaism is and what Zionism is. And Judaism जो है, its orthodox teachings go against the establishment of a state in Palestine. So they are opposed to any idea of Jews settling and making a homeland within Palestine. Let alone कि कत्लो गारत करके किसी का land चोरी करके उनको refugees बना के और उनके ऊपर decades of zulm ढा के, obviously उसके तो खिलाफ ही हैं, लेकिन they are also against the very premise on which Israel has been established. And today आप सुनेंगे कि Israel they make this into a religious case कि this is the land of our forefathers, और Bible में हमें इसको promise किया गया है. And that's not the position that the majority of the Jews hold. ये आज evangelical Christians इस चीज़ को popularize करते हैं and Zionists हैं. And like the rabbi said, अब कुछ fringe opinions भी हैं within small Jewish communities जो अब उसको कहते हैं कि this was God's promise to us and it has been fulfilled, especially in the year 1948. लेकिन you heard him say कि before Zionism started this project in the 1880s and 1890s, the Jews and the Arabs, they used to live side by side. एंड ये एक कांस्टेंट रहा है हिस्ट्री के अंदर. अगर हम ऑटोमन्स के टाइम में देखें, अगर हम अब्बासिड्स के टाइम में देखें, अगर हम उमय्यद्स के टाइम में भी देखें, वी सी मुस्लिम कम्युनिटीज एंड जूइश कम्युनिटीज लिविंग एंड थ्राइविंग. इन फैक्ट जुडाइज्म के लिए जो उनका गोल्डन पीरियड है वो स्पेन के अंदर, जब मुसलमान जो थे स्पेन को रूल कर रहे थे. सो टुडे they want to push this narrative that Muslims are inherently anti-Semitic and they just don't like these people because of their Judaism. That is completely false. और हमें इस चीज़ को appreciate करना चाहिए कि ये दो groups जो हैं, Zionists जो हैं और Jews जो हैं, वो different है. Yes, we have theological and religious differences with the Jews, लेकिन that doesn't mean कि हमारी inherent animosity है Jews के साथ, जैसे कि Zionists want you to believe. So people like this are very important. और मैंने खुद ये बातें नहीं की because I want someone like him to say these things to you because it does carry an impact. So इधर रैबाई ने भी यही शेयर किया कि यूरोप से ये जूस आए हैं. सो ये क्या प्रोजेक्ट है, ये ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट, ये शुरू कहाँ से होता है? एंड इट स्टार्ट्स विद दिस मैन, द मैन ऑन योर स्क्रीन. इसका नाम है थियोडोर हर्ट्ज़ल. और थियोडोर हर्ट्ज़ल जो है, ही इज़ born in 1860 in Budapest, Hungary, and in 1878 when he's 18 years old, he moves to Vienna, Austria. अब वहाँ पे ये है, and he becomes a journalist. Journalist है ये who is a Hungarian Jew moved to Austria. Now, as a journalist, he's covering different stories that are happening all around the world. और वहाँ पे एक ये इशू है जिसको ड्रेफस अफेयर भी कहते हैं. देयर वाज दिस पर्सन इन द फ्रेंच आर्मी, एल्फ्रेड ड्रेफस नाम है शायद इसका, कैप्टन ड्रेफस लिखा हुआ है. एल्फ्रेड ड्रेफस जो है वो ही इज बीन अक्यूज्ड ऑफ सेलिंग सीक्रेट्स टू द जर्मन्स, और फिर उसको द फ्रेंच आर्मी दे ट्राई हिम फॉर ट्रीजन. नाउ ड्रेफस इज ए जू,
एंड जो उसका ट्रायल होता है वो अकॉर्डिंग टू हर्ट्जल एंड इवन मे बी द रियलिटी, इट इज़ द रियलिटी के उसको अनफेयर ट्रायल मिलता है एंड इसको लाइफ इम्प्रिजन कर दिया जाता है. And the reason why he gets this unfair trial is because he's a Jew. And Europe is rife with anti-Semitism. यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा anti-Semitism है इस टाइम के ऊपर. And like for example 14th century, 15th century, इवन 13th सेंचुरी के अंदर इनको जूस को इंग्लैंड से निकाला जाता है, फ्रांस से निकाला जाता है, स्पेन से निकाला जाता है. They are being persecuted in Europe in general. Why are they being persecuted? There's many theories. Some say, you know, that's propaganda. Christians जो थे उन्होंने propaganda किया था यहूदियों के बारे में, कुछ financial embezzlements थी, coin clipping की तरह, etc etc. लेकिन the reality is कि इनके साथ जुल्म हो रहा था यूरोप के अंदर. So for Herzl, the Dreyfus affair is what broke the camel's back. और Herzl जो है deeply affect हुआ था इससे, यहाँ तक कि अगले साल Herzl ने एक पैम्फलेट, उसने एक पेपर लिखा द जुडेनस्टार्ट के नाम से, which means the Jewish state. और यहाँ पे he proposed the idea that Jews need to have a state. Jews need to have a state of their own. Why did they need to have a state of their own? Because of the European problem. European problem क्या था Jews का? The European problem was where these Europeans were being persecuted. पोग्राम्स हो रहे थे. पोग्राम्स होते हैं जहाँ पे एथनिकली क्लेंस किया जाता था, पूरे पूरे गांव जो हैं यहूदियों के जला दिए जाते थे, मार दिया जाता था. मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, नो वन वाज स्पेयर्ड. सो दे वर अ परसिक्यूटेड पीपल. लेकिन दिस persecution obviously doesn't mean that you go elsewhere and start persecuting other people. We should sympathize with the plight of people who are suffering injustice or injustice anywhere. लेकिन obviously that doesn't give you as a victim the green light to victimize other people. So यूरोप के अंदर Jews जो थे persecuted थे, whereas the Ottomans at this time were very welcoming to the Jews and the Jews were living in relative peace with them. तो Herzl क्या करता है अगले साल 1897 में he calls the first Zionist Congress. एक काउंसिल बनाता है लोगों की where 200 academics attend and 200 academics all around the world बाज़ल स्विट्जरलैंड में इकट्ठे होते हैं and वो बैठ के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, the problem of European Jews, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है. And what they decide in this Congress is कि हम Jews के लिए एक state के लिए मेहनत करेंगे, will establish a state for the Jews in Palestine. So now they've chosen a place as well कि पैलेस्टाइन के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर हम यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाएंगे. Now this is a Zionist problem. The Jews that are already living in Palestine are 4 to 6% of the population. 4 to 6% are Arab Jews. Our Arab Jews, they don't have any problem. It's the European Jews who were mostly of a secular, socialist and atheist tendency or leaning. Yani they weren't people who would practice the Torah. And this is not what I'm saying, this is what the rabbi said in his comment as well, that these were people who were not practicing Jews. They weren't religious Jews. Many of them were atheists and many of them were socialists. So they decide कि हमने फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों को आबाद करना, we're going to make a state for them. So they send these two rabbis to Palestine to see how the land is like and if we can live there or not. और वो rabbis वापस आते हैं और वो कहते हैं कि the bride is beautiful but she is married to another man. कि इलाका तो अच्छा है लेकिन कोई और इसके ऊपर रह रहा है. So they already knew कि for us to make this a homeland, we have to do away with the people who are already here. Because they don't want to again live in a place जहाँ पे वो minorities के अंदर रहेंगे दोबारा. क्योंकि minority से ही तो बचना चाह रहे हैं वो, minority में रहना नहीं चाह रहे वो. So this is what Herzl and the Zionist organization decide. And यहाँ पे, I want to derive a lesson from this incident that I've shared. कि Herzl had empathy for his people. उसको तकलीफ हुई थी कि यहूदियों के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा. The solution that he came up with was flawed and it caused more problems, लेकिन at least he had that empathy to do something about it. आज हम भी हैं who see things happening all around us. We might have emotional responses
और बस मे बी हम एक स्कार्फ पहन लेंगे या थोड़े से पैसे डोनेट कर देंगे या एक वीक सेलिब्रेट कर देंगे, लेकिन उसके बाद हम पैसिव हो जाते हैं. उसके बाद वी वेट फॉर द अदर टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस एंड देन वी आर गैल्वनाइज्ड इनटू डूइंग समथिंग एल्स. Whereas what this man does and what the subsequent people who were in this Congress do is a lesson that we need to learn from. Yes, we don't learn from their mistakes and the injustice that they carried out. Lekin the organization, the narrative that they built, the dedication that they had is something that we should learn from. हमारा तो केस पहले ही इतना strong है, लेकिन we are so pathetic at vocalizing and standing up for our case. Their case was weak, but they were good lawyers defending a weaker case. What happens in Palestine, or what's happening in Palestine at the time, is that Palestine is under the Ottoman Empire. And Ottoman Empire में फिलिस्तीन में जब Ottomans rule कर रहे थे तो उनका मिल्ला सिस्टम था. मिल्ला सिस्टम के अंदर the Jews, the Muslims and the Christians, they had autonomy in how they wanted to govern themselves, what sort of laws they would ascribe to. तो उनको काफ़ी ज़्यादा autonomy थी. Taxation जो थी वो मुश्तरका थी, Ottomans को tax दिया जाता था, लेकिन they were in relative ease and autonomy. They would decide their own matters. And the rabbi also alluded to this कि हम तो एक दूसरे के बच्चों को बेबी सिट किया करते थे, हम तो एक दूसरे के साथ फूड एक्सचेंज करते थे, हेल्प करते थे, एक अच्छा नेबरली रिलेशनशिप था हमारा ऑटोमन्स के अंदर. एंड ऑटोमन एम्पायर जो है वो एक्सटेंड कर रहा था टू व्हाट इज इजराइल पैलेस्टाइन एज वेल, और नीचे मक्का मदीना हिजाज तक. द रेड दैट यू सी ऑन द मैप हियर इज द ऑटोमन एम्पायर. So after this World Zionist Congress, what starts to happen in 1882 is that migrations start to take place. और ये migrations जो हैं ये via ship and via land आ रही हैं. Ship में हाइफा एक मेडिटेरेनियन के ऊपर पैलेस्टाइन के ऊपर कोर्स पोर्ट है जहाँ पे ये ships dock करती थी, where Jewish immigrants would come in, and they would also come in via the land, but most of them would come via sea. So 1882 में these migrations start, and in the first wave of migration, which is from 1882 to 1904, about 45,000 Jews come in, and 45,000 Jews or 45,000 people at the time are a couple of villages. 45, 40, 45 हज़ार जो है वो कुछ गांव बन जाते हैं छोटे छोटे. So it's a significant number at that time especially. And then there's a second wave of people that comes in the year from 1904 to 1914. जो पहली wave में लोग आए हैं, the local populace was very welcoming. उनको इतना ज़्यादा problem नहीं था. There's a lot of land to go around. There's not much problems. They already have good relationships with the Jews. So the पहला जो migration हुई है from 1882 to 1904, the Arabs were very welcoming. लेकिन subsequent जो migrations हैं, they started causing tensions between the people, between the two groups. So from 1904 to 1914, another 45,000 come in. So now around 70 to 90,000 Jews have come in to this region of Palestine from 1882 up until 1914. And ये basically क्यों निकल रहे हैं यहाँ से? Again, it's because they are being persecuted by the Europeans, especially Eastern Europe के अंदर and what is modern day Russia today. And how were they able to come in and purchase land? उनको finance कौन कर रहा था? It is extremely influential families जो थी, Jewish families, Zionist families I should say, जो finance कर रही थी. The person that you see on your screen is someone who donated 14 million French francs to this cause and to this migration. And he is Edmund D. Rothschild. He is an influential Zionist, or he was an influential Zionist, and ये एक French banker था. ये Rothschild जो है ना, इस नाम के साथ बहुत conspiracy theories और Illuminati वगैरह जोड़ा हुआ है, उसको साइड पे रख के ये असल में भी exist करते थे. And these are documented facts
about, he visited the place many times as well, and he was very very instrumental in financing this project. So जब ये project चल रहा है तो जो Zionist lobby है वो यूरोप के अंदर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में दे आर एक्चुअली politically lobbying for a state as well. ये 1880 से ये मामला शुरू हो गया था जैसी माइग्रेशन शुरू हुई हैं. And they started forming these small farming communities पैलेस्टाइन के अंदर. छोटे छोटे इन्होंने farms establish करना शुरू कर दिया. They started to till the land in this wave जो कि 1904 से 1914 तक हुई है. इसके अंदर a very important character by the name of David Ben Gurion is also someone who migrates to this piece of land Palestine में. So this is a poster जो कि originally black and white था जिसको कलर किया हुआ है, and नीचे I think आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है your money Jew or your life. This is the life they were living in Russia, or this is the life they were fleeing when they were coming to Palestine. And over here we have a map of European Jews in 1881. 1881 में how are they spread out throughout Europe? If you look at the light blue, वो light blue जो है key के अंदर, they are the most concentration of Jews. So Hungary, modern day Hungary जो है वहाँ पे, and many parts of जो red part है is many parts of Eastern Europe and Russia. This is where many of them lived, and यहाँ पे they were facing a lot of persecution. And like I said, a very significant figure जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो इस टाइम पे जिसने माइग्रेट किया है वो डेविड बेन गुरियन है, who was the first prime minister of Israel. He was born in modern day Poland, और वहाँ से ये इस second migration के अंदर आता है पैलेस्टाइन में. अच्छा, so I said कि जब second migration हुई है तो ज़्यादा लोग आना जब शुरू हो गए, so there were some tensions between the Arab populace and the migrating Jews and the settlers, because the Arabs now were thinking कि यार इतने ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, 90,000 आ गए हैं, इन्होंने पूरे गांव अब इन्होंने आबाद करना शुरू कर दिए हैं. So they started, there were some animosities, लेकिन nothing that became too violent. The Jews, they realized that we need to form groups that would defend ourselves, so that we could defend ourselves. तो उन्होंने ये groups form करना शुरू कर दिए, जो कि like small, groups of people who were armed, and ये एक neighborhood watch type, वो गाँव को बचाएंगे, रात को पहरा देंगे, etc. etc. This force in 1920s or 1920 specifically, this force formed the Haganah. और Haganah जो है वो एक organized military या pre-Israel जो military थी वो Haganah थी. Haganah 1920 में establish हुई थी, and the Haganah is what in 1948 became the IDF, Israeli Defense Force, जो कि आज भी operational है. So उसकी जो inception है वो इन छोटे जत्थों के साथ शुरू हुई, छोटे छोटे groups जो कि basically self defense के लिए है और उन sort of farms को protect कर रहे थे. And इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो subsequent waves आती हैं Jewish immigration की, उसमें weaponry भी अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, because they know कि things are going to heat up, so we need weapons on our side as well. अच्छा, यहाँ पे I'll share a small video introducing a significant figure and what he did in this history.
ओके सो 1915 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है. एक दिस ब्रिटिश पॉलिटिशियन हर्बर्ट सैम्यूल के नाम से. एंड हर्बर्ट सैम्यूल जो है वो एक एक मेमोरेंडम पब्लिश करता है 1915 में, सिग्निफाइंग ब्रिटेन्स सपोर्ट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन. एंड हर्बर्ट सैम्यूल जो है is going to be instrumental coming on because 1920s में जब ब्रिटेन का मैंडेट इस्टेब्लिश होता है पैलेस्टाइन के ऊपर, तो उसमें जो फर्स्ट कमिश्नर इन ब्रिटिश पैलेस्टाइन है वो हर्बर्ट सैम्यूल है. सो हर्बर्ट सैम्यूल इज समवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स. एंड 1915 अभी वो टाइम है जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई है एंड ब्रिटेन का कोई स्टेक नहीं है पैलेस्टाइन में. अभी ब्रिटिश मैंडेट शुरू नहीं हुआ, अभी ऑटोमन्स ही हैं जो पैलेस्टाइन को कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन इवन बिफोर द ब्रिटिश केम इन टू पैलेस्टाइन दे ऑलरेडी हैड एन ओरिएंटेशन टूवर्ड्स डेवलपिंग और गिविंग व्हाट द ज़ायनिस्ट्स वांटेड. अब हाउ डिड द ज़ायनिस्ट्स अचीव दिस? थ्रू लॉबिंग, थ्रू व्हाटएवर मीन्स, हमें डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली दे वर वेरी वेरी एक्टिव बिहाइंड द सीन्स ब्रिटिश के साथ. सो हर्बर्ट सैम्यूल जो है ये मेमोरेंडम शुरू करता है. इस मेमोरेंडम की कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही आगे जाके कोई सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन इट पेव्स द वे फॉर व्हाट इज नोन एज द बैलफोर डिक्लेरेशन. एंड बैलफोर डिक्लेरेशन जो है 1917 में होती है, जिसमें आर्थर बैलफोर्ड जो कि एक फॉरेन सेक्रेटरी है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, ही राइट्स ए लेटर एंड यू कैन सी दैट लेटर ऑन योर स्क्रीन टू बैरन रॉथस्चाइल्ड, जो कि एक और इन्फ्लुएंशियल रॉथस्चाइल्ड फैमिली का बंदा है इन इंग्लैंड. सो जो एडमंड रॉथस्चाइल्ड था, ही वाज समवन हु वाज इन फ्रांस, लेकिन दिस रॉथस्चाइल्ड इज इन इंग्लैंड. एंड आर्थर बैलफोर्ड राइट्स ए लेटर टू हिम सॉर्ट ऑफ डिक्लेयरिंग ए प्रॉमिस ब्रिटिश की तरफ से कि हम तुम्हारे लिए एक होमलैंड कार्व करेंगे पैलेस्टाइन के अंदर, ये हमारी एक कमिटमेंट है. एंड अगेन ये कमिटमेंट कब हो रही है? जब ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं है पैलेस्टाइन के ऊपर. सो इट्स वन नेशन प्रॉमिसिंग अनदर नेशन अ नेशन ऑफ द थर्ड. सो देयर इज नो रियल मॉरल ग्राउंड ऑन विच द ब्रिटिश कैन प्रॉमिस एनीवन द लैंड ऑफ अनदर. लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड द रीजन व्हाई दिस हैपेंड इज बिकॉज ब्रिटिश जो थे वो वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थे एंड ऑटोमन्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया था जर्मन्स के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में, एंड ब्रिटिश जो थे जर्मन्स के खिलाफ थे. सो द ब्रिटिश वांटेड सपोर्ट ऑफ द ज़ायनिस्ट, दे वांटेड फाइनेंसेस, तो दे गेव दिस प्रॉमिस इन रिटर्न. In 1917, after these two waves of Jewish immigration or migration, these are the demographics of Palestine. And these numbers are important because they will change dramatically. 80% Arab Muslims, 11% Arab Christians, and now there's 9% Jews, which includes Arab Jews as well as the Jews that have come in from Europe. पहले ये 4 to 6% थे, now they are 9% in 1917 after 2 waves of migration. Zionists के लिए ये migration जो थी ये बहुत important थी because they knew कि whenever there's going to be any negotiation, हमारे numbers would matter a lot. So they were very keen on making sure that this migration continued. World War I is over and the Germans are defeated and the Ottomans are defeated with them. So British जो हैं वो victors हैं and the British gain control of Palestine. Basically allies जो हैं वो Middle East को अपने अंदर divide कर लेते हैं. French mandate चला जाता है, सीरिया को French govern करने लग जाते हैं. So in Syria a French mandate is established, in Lebanon a French mandate is established, and जो Palestine है वो the English they start sort of ruling over the Palestinians. And as a result of their rule over Palestine, और Herbert Samuel अब आ गया है, उसने जो Jewish immigration है to Palestine उसको
एक्सेप्शनली ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया. एंड वो इंक्रीज़ जो है इन जूइश इमिग्रेशन टू पैलेस्टाइन फ्रॉम 1920 when the British come in up until 1939, 370,000 Jews come into Palestine. ये different waves में आ रहे हैं over a period of 19 years from 1920 up until 1939. And obviously जैसे मैंने कहा कि they are bringing in weapons, weaponry भी आ रही है साथ साथ, and now these tensions they escalate obviously between the local populace and the people that are coming in. ज़ाहिर है वो देख रहे हैं कि ये हमारा लैंड भी अब यूजर्प हो रहा है, एंड दे ऑल्सो नो अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1917. बैल्फोर डिक्लेरेशन कोई सीक्रेट नहीं था, द अरब्स न्यू अबाउट इट. एंड जो कुछ अरब लीडर्स थे हु आर अपोज टू द ऑटोमन्स, ब्रिटिश ने उनको प्रॉमिस किया हुआ था कि जब हम ऑटोमन्स को डिफीट करेंगे तो हम तुम्हें इंडिपेंडेंस दे देंगे फ्रॉम द ऑटोमन्स एंड द अरब्स कैन सॉर्ट ऑफ रूल themselves. So जो अरब नेशनलिस्ट्स थे वो भी ब्रिटेन के साथ थे against the Ottomans. But when the British start, ensuring that more Jews start coming in, तो वो जो अरब नेशनलिस्ट्स हैं वो भी angered हैं, जो लोकल अरब पॉपुलस है वो भी काफ़ी ज़्यादा agitated है. And उसके अंदर then we have a figure by the name of Izzuddin al-Qassam. Izzuddin al-Qassam was someone who was born in Syria, and he was fighting against the French mandate in Syria. And in 1920, he moves to Palestine and becomes an imam in Haifa, which is a port city. Or udhar he starts to organize himself and a militia against the British and the Zionists. Izzuddin al-Qassam जो है वो he's revered as a hero amongst the Palestinians. एंड अभी जो हमास का एक मिलिटेंट विंग है उसका नाम कस्साम ब्रिगेड है आफ्टर इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम. सो इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम वाज समवन हु थॉट के डायलॉग इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर बिकॉज ये काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिफेंडिंग आवरसेल्व्स, वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड. हम एक मिलिशा बनाना चाहिए अरब्स को अपने आप को डिफेंड करने के लिए. एंड दैट्स व्हाट ही स्टार्ट्स टू डू. लेकिन the problem is that at the time the Arab leaders in Palestine don't agree with him, and they still want and they still think that negotiations will give them fruit. 1935 में क्या होता है कि Al-Qassam is killed in an encounter with the British, and after him what happens is कि the Arabs are sparked into a revolt 1936 में. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine, a policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. Against all principle, the British government imposed the Balfour Declaration, which is abhorred by all Arabs in the Near East, and on favoring the establishment of a national home for Jews, forgot intentionally to safeguard the civil rights of the non-Jewish population. The Arabs, who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about, and until the government introduces an essential change in its present policy. So यहाँ पे भी he identifies Jewish immigration as the main problem that the Arabs have with the British. So they start strikes और एक revolt शुरू हो जाता है, एक armed resistance शुरू होती है against the British and the Zionists. And this carries on for 3 years. 1936 से लेके 1939 तक the Arabs they revolt against the British, and there's a lot of casualties on the side of the Arabs. There's casualties on the Zionists and the British side as well, lekin more so on the Arabs. And there's a quote by a historian where he says the battle for Palestine was lost by the Palestinians not in 1948 but in the late 1930s. In late 1930s, 36 से 39 जो Arab revolt हो रहा है.
because Britain completely smashed to the ground the Arab revolt and the Arab irregular forces. What happened is कि 1936 से 39 ये अरब लीडर्स को इतना ज़्यादा उन्होंने क्रश किया ब्रिटिश ने कि either their leaders and their tribal elders were killed या फिर वो एग्जाइल में चले गए लेबनान और जॉर्डन और सीरिया. एंड इसका बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट होता है आगे जाके, बिकॉज जब ब्रिटिश छोड़ने की बात कर रहे हैं और जब कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो कोई लीडरशिप ही नहीं है अरब्स की, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है. वाई? बिकॉज इन 3 सालों के अंदर उनकी एक लिहाज से कमर तोड़ दी गई थी. लेकिन nevertheless they did, or they were able to convince the British, because they had made things difficult for the British, कि फिर ब्रिटिश ने एक वाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया 1939 में, where they accepted some terms of the Arabs and they limited Jewish immigration to 75,000 in 5 years, कि 5 साल में 75,000 से अब ज़्यादा नहीं आ सकते. एंड उन्होंने हाइफा के ऊपर जो शिप्स आ रही थी उनको इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया, एंड दे वोंट लेट द इमिग्रेशन कैरी ऑन. यहाँ पे व्हेन द ब्रिटिश मेक दीज प्रोमिसेस, नंबर 1 प्रॉमिस क्या था उनका कि इमिग्रेशन को हम लिमिट करेंगे, 75,000 से ज़्यादा नहीं आएंगे 5 साल में. द सेकेंड प्रॉमिस वॉज कि कोई लैंड ट्रांसफर्स नहीं होंगे अब, मीनिंग द जूज वोंट बी एबल टू परचेज लैंड फ्रॉम द अरब्स. Number 3, they promised that within 10 years, हम Palestinians को independence देंगे and they'll be able to govern themselves. These are promises that were made to the Palestinians in this white paper published in 1939. What happens in response to the white paper is कि जो Zionist movement है, जिसके अंदर अब हागाना जो है, जो का इनका एक armed front है, जो कि initially established हुआ था for self defense, now it's organized. उसके अलावा there are other groups that form as well. There's a group of these Zionists called the Irgun and the another one called Lehi, जिसको Stern Gang भी कहते हैं. So ये 2 groups जो हैं Lehi और Irgun जो हैं, because of this white paper published by the British, ये ब्रिटेन और ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पे एक पोस्टर भी आप देख रहे हैं जहाँ पे कार बॉम्बिंग्स एंड माइंस एंड किडनैपिंग्स के बारे में लिखा है. बिकॉज what the Irgun would do is they would kidnap, they would bomb and they would assassinate the British to put pressure on them कि आप ये white paper हटाओ और हमारी immigration को allow करो without any limits, because they knew कि the importance of numbers is very very significant, क्योंकि कल ब्रिटेन ने इस जगह को छोड़ना है और हमारे पास फिर ज़्यादा claim to the land होगा because we have more numbers. So now the British after the Arabs are now facing problems from the Irgun and the Lehi, the Stern Gang. World War II शुरू हो जाती है in this time, and the Zionists, what they do is they start funding the war again for the Allies, for the British. And जो Palestinian Jews हैं, और सॉरी जो Jews हैं Palestine के अंदर, they form an army of 30,000 men and they go fight for the British against the Nazis in Germany. So वो they lend a helping hand to the British World War II के अंदर. And obviously आप सबको पता है कि World War II में Holocaust भी हुआ. And Holocaust के बाद, World War II के बाद, especially after the Holocaust, the Jews had some sort of a moral upper hand on the British. एक तो नंबर 1 उन्होंने कहा कि तुम्हारे आर्थर बैलफोर्ड ने हमें प्रॉमिस किया था होमलैंड पैलेस्टाइन के अंदर, हमने तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प किया है, अब देखो हमारे ऊपर जुल्म भी कितना हुआ है, यूरोप के अंदर नाज़ीज़ ने हमारे ऊपर कितना जुल्म किया है हॉलोकॉस्ट के साथ, और अब यूरोप से एक एक्सोडस जो है जूस का निकल के पैलेस्टाइन आना चाह भी रहा है. So there's a lot of pressure on the British to allow immigration because of what had happened in World War II. लेकिन the British are adamant कि they want to stick to the white paper policy because उनको डर था अरब साइड से भी कि अगर हम ज़्यादा अलाउ कर देंगे जूइश इमिग्रेशन को तो अरब्स जो हैं वो फिर हमारे खिलाफ आर्म्स उठा लेंगे. So they started intercepting
जूइश इमिग्रेशन शिप्स पोर्ट पे और उनको आने नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, इसी टाइम एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है स्पेशली 1930s के अंदर। 1930s में the Haganah especially and Zionist leaders in Palestine, what they start doing is they start gathering information. वो intelligence operations करते हैं and they start gathering information about all the villages in Palestine. जितने भी रूरल एरियाज के अंदर गांव हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन विद इंट्रिकेट डिटेल्स, कितने लोग हैं इस गांव में, क्या उनकी एजेस हैं, मैन ऑफ फाइटिंग एज कितने हैं, क्या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, कितने हैं जिन्होंने अरब रिवोल्ट में हिस्सा लिया था, कितने हैं जिन्होंने जायनिस्ट को मारा हुआ है, एरियल फोटोग्राफी जो है उन विलेजेस की, उनकी टोपोग्राफी किस किस्म की है, उन विलेजेस के वो बिकॉज पैलेस्टाइन में हिली हैं विलेजेस बहुत ज़्यादा, उनको उन्होंने स्टडी किया। दे यूज्ड अरब हॉस्पिटैलिटी, यानी दे वुड गो एज गेस्ट्स इन दोज विलेजेस जस्ट टू स्पाई एंड सी के यहाँ पे कौन है, क्या हो रहा है, हम कैसे अंदर आ सकते हैं, विच विलेज शुड बी प्रायोरिटाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो they gathered the what are now called village files, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग की उन्होंने, बिकॉज दे न्यू कि हमें ये बाद में काम आएंगी चीज़ें। So the British basically don't budge on the white paper. So what the Irgun start doing is they start intensifying their attacks against the British. जेरूसलम के अंदर किंग डेविड होटल के अंदर ब्रिटिश मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे। इरगुन ने ब्रिटिश मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को बॉम्ब किया एंड 91 ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को कत्ल किया वहाँ पे। एंड इफ़ यू रीड और सी और वॉच न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ दैट टाइम, तो इरगुन को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था एंड दे यूज्ड टू ब्लेम इरगुन फॉर दीज अटैक्स। नाउ व्हाट द जूज हैड डन और व्हाट द ज़ायनिस्ट्स हैड डन एट द टाइम व्हिच वाज वेरी सिग्निफिकेंट इज के जो हागना था वो उनकी ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ आर्मी थी जिसको अब बेन गुरियन हेड कर रहा है। इरगुन एंड लेही जो स्टर्न गैंग है, दे आर नॉट ऑफिशियली ऑफिशियली पार्ट ऑफ द ज़ायनिस्ट ऑफिशियली। सो जब ये अट्रॉसिटी हुई तो बेन गुरियन ने बहुत इजीली अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, कहना यार इरगुन तो टेररिस्ट्स हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। एंड ये एक बहुत कंसिस्टेंट थीम है with the Israelis that you see today even, that when they're on the political table they have another stance, but on ground what they're doing is completely different. When they're sitting on the table they say we respect international law, we'll abide by those rules, etc etc, but what happens on ground is completely different. And this is what's happening since before the state of Israel was even born. तो इरगुन ने ये अटैक किया एंड बेन गुरियन ने क्रिटिसाइज किया इरगुन को, लेकिन अंदर से वो they were one and the same. And what the Irgun later do is they capture these two British sergeants and they hang them on trees just to send the British a message that we are serious in our determination and आपने जो immigration है उसको खोलना है। There's this another quote I'd like to read. I cannot imagine Zionism without violence, whether before or after the establishment of the state of Israel. You know what I'm sharing with you over here are very brief snippets कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ. If you do your own research तो आपको पता लगेगा कि इरगुन और ये लही वगैरह जो हैं ये किस किस्म के अटैक्स कर रहे थे उस टाइम पे ब्रिटिश मैंडेट के ऊपर. So the British they succumb to the pressure और वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम UN को will let the UN decide कि पैलेस्टाइन के साथ क्या होना चाहिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हमने रिजॉल्व करना है. So UN जो है वो न्यूली फॉर्म हुआ 1945 के अंदर एंड ये मामला जो है यूएन के पास चला जाता है एंड व्हाट द यूएन डज इज द यूएन प्रपोजेस ए पार्टीशन प्लान एंड इस पार्टीशन प्लान के तहत 1947 में ये मैप प्रपोज किया गया फिलिस्तीन के लिए. नाउ द ऑरेंज इज लैंड दैट वाज प्रॉमिस्ड टू द पैलेस्टीनियंस बाय दिस यूएन पार्टीशन प्लान. व्हाट इज इन द लाइट ब्लू इज व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू द इजरायलीज. लेकिन अगर हम अब डेमोग्राफिक्स को स्टडी करें, according to this partition plan, the UN promised the Jews 57% of the land and they promised the Arabs 42% of the land. बीच में जहाँ पे जेरूसलम है which is in white, वो internationally govern होगा and वो एक sort of neutral territory है. So demographics क्या है?
The Jews now make up 1/3 of the population, so they're 33%. 33% को 57% of the land मिल रहा है, and 67% को 42% of the land मिल रहा है. Obviously, the Jews, they did lobby, the Zionists, they did lobby with the UN to get this sort of a proposal because it doesn't make sense when you look at the numbers. And what else doesn't make sense is that the Jews only owned 6 to 7% of the land. इस पूरे इलाके में से they only owned either 6 or 7% of the land. बाकी ownership भी land की जो थी वो Arabs की थी और वो the Jews were living as tenants. So ये map आपने काफ़ी देखा होगा 1946 में when there is Jewish presence, this is signifying कि जो white है is Jewish land ownership. 47 में जो plan UN देता है is the same plan that has been shared here 1947 में. 1949 में when the state of Israel, 1948 when state of Israel was declared, and in 1 year the Israelis did not respect the UN partition plan even though they got a disproportionate number or they got a disproportionate portion of the land, 57%. Lekin they ended up taking up 78% of the land in 1948 to 49. And वो भी उन्होंने कैसे लिया उसके बारे में बात करेंगे, how they displaced these people, how they ethnically cleansed villages, और वो जो इन्होंने information gathering की हुई थी villages के बारे में, how they used it to destroy the Palestinian population. And जब ये UN partition plan propose हुआ था, obviously the Arabs weren't happy. They weren't happy. Why? Because 1/3 of the population is getting 57% of the land. Unfair deal है. तो वो खुश नहीं थे इस डील से, and उन्होंने इस डील को रिजेक्ट किया. आज भी इजरायलीज इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हैं कि the Arabs they never wanted a two-state solution. The Arabs were never happy. तो इनको तो तब भी इनको UN की भी बात नहीं मानी. And it might seem to the listener कि यार शायद Arabs जो हैं unreasonable हो रहे थे. नहीं, अगर if you study history, you'll find out that they weren't necessarily against a two-state solution at the time. Because even if they were against it, they would still have moral grounds to be against it because it's being imposed on them through immigration. Lekin they weren't necessarily opposed to it. What they were opposed to was the unfair treatment or disproportionate division of the land. So Ben Gurion ne kya strategy adopt ki? He said कि because the Arabs haven't accepted this plan, हम क्या करेंगे कि जो 57% हमें प्रॉमिस हुआ है हम उससे ज़्यादा लेंगे, एंड हम कहेंगे कि हमने इसलिए ज़्यादा लिए कोई अरब्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों साइडों से होनी चाहिए. तो उन्होंने अगर एक्सेप्ट नहीं किया सो हमने भी नहीं किया, तो हमने 57 से ज़्यादा 78% ऑफ द लैंड ले लिया. Now, how they ended up taking this land is through a systematic displacement and killing of Palestinians. अब इस टाइम पे because of the Haganah, the Irgun and the Lehi Stern gang, they have amassed a very organized army of 40,000 Jews. And सब हर immigration के अंदर weaponry भी आ रही है. So they are armed to the teeth and they have strong numbers. The Arabs on the other hand, the Palestinians are 3,000 who are 3,000 irregulars जिनकी कोई central leadership नहीं है. And फिर बाहर से 4,000 Arab volunteers थे from Lebanon, Jordan and Syria and even Iraq. 4,000. So all in all there's 7,000 Arab fighters who are not who don't have too many arms, and there's 40,000 on the Jewish or Zionist side. So obviously numbers के अंदर they are failing. मुझे याद है I was reading a book in 2009. I purchased that book and I was reading it. It's called The Ethnic Cleansing of Palestine. मुझे याद है जब मैं वो किताब पढ़ रहा था back then, I had a very I had feelings of frustration उस किताब को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ यार ये अरब सो क्यों रहे हैं, ये कहाँ हैं, ये लेबनीज, ये जॉर्डेनियंस, ये what's happening, where are these people? And the sad reality is that the Arabs around, the Arab League at the time,
जिसके अंदर इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, अरब लीग के मेंबर्स थे, दे फेल्ड द पैलेस्टीनियन पीपल. एंड आगे जाके जो आर्मिटाइज अग्रीमेंट्स भी होती हैं उसमें भी दे फेल्ड द पैलेस्टीनियन पीपल. द जूज हैड डन देयर होमवर्क, द ज़ायनिस्ट्स हैड डन देयर होमवर्क. दे न्यू कि एक एक गांव किधर है, कितने उसमें लोग हैं, हमारी किल लिस्ट के अंदर कौन कौन है, किसको ख़त्म करना है हमने, कहाँ पे हमने एक किस्म का टेरर फैलाना है, यू नो व्हाट वी हैव टू डू. एंड they started implementing their strategy and they started entering into these villages and they started depopulating these villages. कुछ पैलेस्टीनियन फैमिलीज को कह दिया था कि यू कैन लीव, अभी जब मामला ठंडे हो जाएंगे, जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा, यू कैन कम बैक. बहुत ज़्यादा फ़िलिस्तीनी जो हैं आज भी ये चाबियाँ लेके फिरते हैं, बिकॉज when they left they locked their doors thinking कि we will be back when things become better. And a lot of them still today hold these keys to their own household. Around 500 villages that were depopulated from 1947 up until October 1948. 500 villages. जिसके अंदर 700,000 Palestinians ended up being displaced. 700,000. उसमें से I'm just going to share one incident. It's called the Deir Yassin massacre, जहाँ पे 250 to 300 Palestinians were killed. The pictures that you see in front of you are from the Deir Yassin massacre. I want to read to you the testimony of a survivor from that massacre. And this is a woman who's 83 years old, Maryam Akil, that's her name. And she lost her father, her mother and her 2 brothers. And she was 10 years old when this massacre took place. तो वो कहती है कि Jews went down to the village toward dawn. Dawn के टाइम या सुबह के टाइम they came to the village. They surrounded the village. They didn't want anyone to escape from the village. They had come to kill us all. Women and children began to flee when the conflict broke out, but no one survived the Jewish bullets. Clashes continued throughout the day. Our whole house was under fire. Our mother didn't know where to hide us. They took my 16-year-old brother out in the garden and bowed his head. They martyred him by shooting 5 bullets in his head. They killed him in front of my sister's eyes. Hundreds of thousands of Palestinians were forced to flee their villages and towns in historical Palestine to neighboring places like Jordan, Syria, and Lebanon. This is one story out of hundreds and thousands of stories. Stories that these people live with today. Stories that motivate these people to do the same with others as well. Even though हम उससे agree नहीं करते, लेकिन we can still understand where they're coming from. 1948, May 14, 1948 में Israeli state establish होती है. The British leave. As soon as the British leave, David Ben-Gurion announces कि the state of Israel has been established. उससे पहले इन्होंने massacres शुरू कर दिए थे. State of Israel establish होती है. The massacres continue and they end up getting 78% of the land. What happens then is the Arab League, जो कि सो रही थी इस वक्त, अब उठी है and they come in. And वो attack करते हैं Palestine को, लेकिन the Israelis are well prepared and they are able to fend them off. उसके बाद UN ने क्या किया? The UN sent Folk Bernadotte, जो कि एक influential बंदा था at his time, and he was someone who had negotiated the freedom of more than of thousands of POWs जो concentration camps में थे World War II में. So he was a very influential figure at the time और एक humanitarian था. UN ने इसको टास्क दिया कि तुमने ये जो अरब लीग और इसराइल की जो आपस में लड़ाई हो रही है, तुमने इसको मीडिएट करना है, सॉल्व करना है, and come to a conclusion. He goes on a fact-finding mission to Palestine. He visits all these villages that were depopulated. He goes to all these refugee camps and he concludes कि Palestinians के साथ ज़्यादती हुई है and we need to help them and we need to help them against the Zionists. So the Irgun, what they do is they kill, they assassinate. और Bernadotte जो है जब वो assassinate होता है तो international community काफ़ी ज़्यादा लान तान करती है Irgun को और Israel in general को, लेकिन nothing really happens. उसके बाद डिटेल्स जो हैं I didn't plan कि मैं उन डिटेल्स को यहाँ पे शेयर करूँ,
लेकिन बेसिकली एग्रीमेंट्स हो जाती हैं, जॉर्डन और इसराइल की एग्रीमेंट होती है, सीरिया और इसराइल की गोलान हाइट्स के अंदर एग्रीमेंट हो जाती है, एंड बेसिकली जो बॉर्डर्स हम आज देखते हैं वो सॉर्ट ऑफ एग्री हो जाते हैं जनरली स्पीकिंग, इवन दो उसके बाद इसराइल जो है इट डज टेक अप मोर टेरिटरी विद इन द वेस्ट बैंक एंड इन गाजा. सो in the end, you know what needs to be appreciated is that the Nakba was not something that started in 1948 and ended in 1949. The Nakba, or Nakba का मतलब है catastrophe, the Nakba continues today. जो आज हम देखते हैं पैलेस्टीनियंस जो अभी भी डिस्प्लेस किए जा रहे हैं अपने घरों के अंदर, हेब्रॉन में, वेस्ट बैंक में, गाजा में, अब this is not something that happened in the past and has stopped. For the Palestinians, it continues today. And this is why this context is important. Because ये linear motion के अंदर सब चीज़ें connected हैं आपस में. Whatever is happening today has a history. I've only shared with you 68 years of history. उसके बाद is 72 years of history as well, where if not the same things but similar things are happening to the Palestinian people. अच्छा, आखिर में बस ये एक छोटी सी वीडियो है, ये प्ले करके I will conclude inshallah. أنا أعتقد أنه اليوم إذا كنا نتكلم عن نكبة لم تبدأ عام 48 هي لم تنتهي عام 48. There's a new Nakba taking place as we talk. It just doesn't have the same features and characteristics of the 48 Nakba. The 48 Nakba was in one period of time and very dramatic and massive. The present Nakba is a very slow process of expulsion, annexation, demolition of houses, imprisonment of people. It's going on for 40 years. It's, in a way, it's a new version of the same idea of how to cause the Palestinians to leave Palestine. This footage is from the city of Ramallah. At gunpoint, Palestinians are forced to strip naked in public, part of an ongoing psychological war, aimed at making Palestinians feel they have neither safety nor dignity. So basically, all of this is relevant to what is happening today. अगर हम पूरी हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, या तो अगर हम सिर्फ पूरी हिस्ट्री को समझेंगे तभी हम जज कर सकते हैं कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसको रोका भी कैसे जा सकता है. You know, this picture was taken in 1948, the one on the right, and the one on the left is in the late 2000s, a recent picture. लेकिन it's the same plight. अभी भी उनके बच्चे उनके हाथों में मर रहे हैं. And you know, this is what, you know, gives us a lot of pain and should give us a lot of pain. And इन चीज़ों की वजह से हम सबको इकट्ठा होना चाहिए. इन facts की वजह से हम सबको इकट्ठा होना चाहिए. We should be against what's happening to these people. We have another affiliation with them because they are Muslims. लेकिन even if they weren't, we should still be on their side. Anything that I've shared with you, or everything that I've shared with you, is factual in terms of you know the authenticity of them. और आप चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को. हाँ, हो सकता है कुछ numbers जो हैं वो क्योंकि approximations हैं 5 to 6%, 6 to 7%, वो change हो सकते हैं. लेकिन I've not shared my opinion here. तो I think this makes a very good case for the plight of the Palestinians. और हम सबको इसके बारे में concern होना चाहिए और हम सबको कोई ना कोई we should play some part, one or the other. And I think where we fail is कि हम consistently कुछ नहीं करते and हम narratives को नहीं जीतते. Israel और जो Zionist movement है, they give a lot of importance to the narrative. They always make sure that they have the narrative. They do lobby. हम नहीं ये चीज़ें करते. There's a lot that we can learn from the Zionist movement as well. कि we should lobby, we should put in an effort.
Nothing is insignificant. कोई अगर फाइनेंस दे रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है, कोई लॉबी कर रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है. नैरेटिव बिल्डिंग, कीपिंग दीज थिंग्स अलाइव. आप जाके बाहर पूछें कि हॉलोकॉस्ट क्या है, एवरीवन नोज व्हाट द हॉलोकॉस्ट इज. You ask them what is the Nakba, no one knows what the Nakba is. It's because the Jews have kept their tragedy alive amongst not only their people but others as well, whilst we have made our tragedies forgotten not only for others but for ourselves as well. ये असल मसला है हमारा. किसी को पता है कितने अल्जीरियंस जो हैं उनको मैसेकर किया गया था by the French? It puts the numbers of the Holocaust to shame. But what is shameful more than that is that we don't know about these things. The Jews have been successful in keeping alive the memory of those who were killed innocently, whilst we have not done service to the memory of those who died those who died in injustice and were our brethren in faith. So thank you very much. Jazakumullah khair for being patient.